of functions. We begin with series of functions. Series of functions is defined the way we define the series of numbers. Uh, it is defined from the given series of a sequence of functions. And let us suppose that we have a sequence of functions fn, and suppose each function is defined on some subset of real numbers. Then the sequence of partial sums, which we are denoting by Sn, of the infinite series. Sequence of partial sums is always associated with the infinite series, and this is the notation for infinite series. For each point x in D is defined like this. How we define? We say in the first term in this sequence of partial sums is S1, and this is a function, and this function is defined as S1 of x has to be F1 of x. F1 is already defined. Then the function S2, which is the second term of the sequence of partial sums, is defined as the sum of first two functions F1 plus F2, or you can write it as S1 plus F2 also, and so on. N plus 1th term has to be uh, nth term of the partial sum plus n plus 1th function. So this way we define the sequence of partial sums of a series of functions. And then how do we define the convergence of this series? Because this series is also a series of functions, because each term in this series is a function. So we will have two types of convergences, and that will the one will be pointwise convergence of the series, and another will be the uniform convergence of the series. But the pointwise convergence and uniform convergence will depend upon the convergence of the series of partial sums. We will say that this infinite series is convergent if the sequence of functions, if the sequence of partial sums converges to some function f. Oh, okay, that means we want to check about the convergence of this series. We might take n from 1 to infinity as well, and we know that we have defined a sequence of partial sums. Then we say that, and this is a sequence, and we know that how to check whether a given sequence of functions is convergent or not. So to check whether this series is convergent, what we have to do, we have to see if this sequence of partial sums is convergent. Then that will be to say that the series of functions is convergent. I have just used the word convergent. It has to be clear. When the series of partial sums is pointwise convergent, then we will say, then let me write it somewhere here just to make it clear. If this sequence of functions is pointwise convergent, then we say that the series Fn is pointwise convergent. So the pointwise convergence of sequence is pointwise convergence of the series, and if the sequence of partial sums is uniformly convergent, then the series is said to be uniformly convergent. Is said to be uniformly convergent. So this is the way when you should not have any problem in defining the series, in defining the convergence of the series, as it has done for, as we have already done this for a series of numbers. The only difference here is that we will have two types of convergences, since we are having functions, and convergence of functions is either pointwise or uniform. So this is some notations. We are going to fix some notation. We will often denote the series by summation fn when we are clear about what is the range of n, and whether n is changing from 0 to infinity or n is changing from 1 to infinity. Just to for simplification, we use this notation summation. Otherwise we might use summation n from 1 to infinity, or
If summation changes from n from 0 to we have to write n from 0. This is more descriptive. It is more means it tells everything कि the series कहाँ से कहाँ change हो रही है. So these are the notations that you are already aware of. And we have another thing to remember. If the series summation n from 1 to infinity mod of fnx, we are taking the mod of the functions. If this series exists for each x in D, means this number is finite. Exists means this number is finite, means it is convergent. We say that the series summation fn is absolutely convergent. This is for each x, means this is pointwise. We are talking about pointwise convergent. And if the sequence, this is different thing. Okay, be careful. Here we are talking about, this is n from 1 to infinity mod fn x. We are fixing x. When we fix x, this is a series of numbers, and we are saying that if this series of numbers is convergent, that would mean to say that this corresponding series of numbers fn x is absolutely convergent. This is the absolute convergence definition. And what we are saying more in it, if this happens for each x, if this happens for each x in D, then we say that this series of functions fn is absolutely convergent. So this is the definition of absolute convergence. You have to keep in this mind. Further, if this sequence, starting with this again, if the sequence of partial sums Sn is uniformly convergent on D to F, then we say that the series Fn is uniformly convergent. This is what I have already told you. So, having done the definition of convergence of series of functions, let us begin with some example, and we will establish that how we can check whether the series is convergent or not. How the things from sequences will be utilized to check the convergence of series. So in this example, we are given we are given a sequence of partial sums of a series. सीरीज हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ नहीं है, हमें कहा गया है कि कोई एक सीरीज है फंक्शंस की. वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, तो उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस हमें गिवन है कि उसका nth पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है उसका nth फंक्शन जो है, दिस फंक्शन हैज टू बी सम ऑफ first n functions, and this function is given to us to be n square x upon, ये सम करके ये आपके पास आ रहा है 1 plus n 4x square. ओके, एंड x का जो डोमेन है, x अभी रेंज क्लोज इंटरवल 0 1 में चेंज हो रहा है. और लेट अस सी के वेदर दैट सीरीज, जिस सीरीज का ये पार्शियल सम्स हैं, वो सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है. एंड हाउ डू वी चेक द कन्वर्जेंस ऑफ अ गिवन सीरीज? वी चेक whether the sequence of partial sums is convergent or not, and we are given this sequence of partial sums. So to check the convergence of this given series, we have to check the convergence of this. That means we have to check the convergence of this given sequence. So first of all, I'm going to check the pointwise convergence. Pointwise convergence के लिए हमें just simple limit calculate करनी होगी. So for each fixed x, let us calculate this limit n tends to infinity Sn x. तो Sn x आपके पास given है, it is n square x upon 1 plus n to power 4 x square. So let us try to calculate this. We are having, and clearly we can do certain changes here. You can take out n out of everything. It will be x upon 1 upon n square plus no, we don't have to take n, we have to take n to power 4 out of everything. Let's take 1 upon n square x as it is, and you are taking n to power see, I have done some computational. Okay, that's okay. N to power 4, you will have 1 plus 1 upon n to power 4 plus x square. Okay,
Then there is some cancellation. You have in numerator n to power 2, and in denominator you have n to power 4. So once you cancel these, you will have in denominator 1 n to power 2. I will have x upon n to power 2, 1 upon n square plus x square. Okay, so now you can further readjust this thing. You can write it as x upon n square upon 1 upon n to power 4 plus x square. Now clearly whatever x you choose, if you take x equal to 0, then every term of this sequence is 0. And if x is not equal to 0, then you take the n tends to infinity, and then clearly this number, if you fix x, then this numerator part will go to 0, and this denominator part will go to x square, but hardly 0 upon x square is 0. So you are going to have get the limit to be 0. यहाँ पर भी limit है. This has to be limit n tends to infinity. तो point wise इसकी limit क्या है? Point wise इसकी limit 0 है. That means this sequence of partial sums, for each x converges to the function 0 function, which is 0. And this implies that कि जिस series के ये partial sums हैं, वो series जो है, that series is point-wise convergent. That series is point-wise convergent. So point-wise convergence is established, and what is the point-wise limit of this series? Point-wise limit of this series is a function which is 0 everywhere. Now, for the to check whether this series is uniformly convergent or not, what we have to check? We have to check whether the sequence of partial sums is uniformly convergent or not. And to check the sequence of partial sums is uniformly convergent or not, what we are going to do, we are going to use the techniques from the sequences of functions. And you see here, this function n square x upon 1 plus n to power 4 x square, this can be seen to be a bounded function, but still we can find out the points where it has maximum or minimum. And for maximum and minimum, what we do, we just find out the zeros of the derivative of the function. We just differentiate this function and equate it to 0, and from there we will get the points as some points, and to some of the points we might have maximum, or some of the points we might have minimum. And for to determine at which point we have the maximum or minimum, we have to use the double derivative test. Because we have the functions differentiable, we can use this double derivative test. And here is the derivative calculated. Let me calculate also. You have this n square x upon 1 plus n to power 4x. If you differentiate it, you just use this quotient rule, and by quotient rule it has to be how you differentiate it. Has to 1 plus n to power 4x square, and differentiation of the numerator, and differentiation of numerator here is 2n square x, and then it has to be minus, then it has to be differentiation of the denominator का differentiation क्या आएगा? It has to be 2 x n to power 4 into numerator क्या आपके पास? numerator आपके पास है n square x square, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, 1 plus n to power 4 x square का whole square. Now you simplify these terms. You have to write. I'm writing it somewhere here just to make space. I'm writing it here. So in numerator part, I have something. What you say? You can take out n square out of everything. You can take n square, because in the first term I have n square, in the second term I have n to power 6. So I'm going to take n square out of everything. What is left to us is 1 plus. Let me multiply with 2x also. I will be having 2x plus n to power 4. It is 2 also. 2 times n to power 4, and then it will be x cube minus here what you have? You have 2x cube n to power 4, and what else is left to you? Yeah, this is it.
Is it okay? Or something is left there? Differentiation, can somebody confirm whether because it'll just go. Is it accurately calculated? I think there is some problem in the derivative of this function. Let me calculate it separately. N square x upon, let us do it in an open space. We have this function Sn x is equal to n square x square upon, is it n square x square? Yeah, it is n square x only. Sorry, there is no n square. It is n square x. Just it is n square x 1 plus n to power 4, and it is, I have to check whether it is also x square or not. It is x square. In denominator you have x square, so it is x square. Now let us differentiate it. Derivative of this function, it has to be n square into 1 plus n 4x square minus, it has to be twice x n 4 into n square x. Yeah, this is it, upon 1 plus n 4x square whole square. Differentiation of this function, and then you get, you just simplify, you take the n square out of everything. What you will be having, 1 plus n 4x square minus, here it is 2 n 4x square, and denominator will not change. Denominator will be one same thing, and 4x square whole square. And you see in the top you have n square and you have 1, and you have n power 4x square minus twice of that, the same thing, and it has to be minus of n 4x square upon 1 plus n 4x square whole square. This is exactly what is being calculated there. There is nothing wrong. So here it is. So we just calculated the derivative. Now what we need to now do, we need to find the points where this derivative is 0. That means s prime will equate it to be 0. This 0 implies that denominator is not 0. You have to take n square 1 minus n 4x square is to be equal to 0. And this clearly implies that n, since this is a product and n is not 0, so the only choice is that 1 minus n 4x square is equal to 0. And this further implies that n power 4x square equal to 0, equal to 1. And from here I get x square equals to 1 upon n 4, and from there I get x equals to plus minus 1 upon n square. So these are the points. So I'm not taking minus part because x has to be in the closed interval 0 1, so that means x has to be greater than or equal to 0. So the only value that I will take it, x equals to 1 upon n square. So this is the point where the function is 0. Now we have to check whether at this point this function Sn x has maximum or minimum. And you can check out that the double derivative, the value of the double derivative at this point comes out to be minus n to power 4 upon 2, and clearly it is negative. And then this implies that it's negative, means this implies that the function Sn x has maximum at the point x equals to 1 by n square. And what is the maximum value? What maximum value we have to calculate? So maximum value calculate karo aap. Maximum value means Sn at 1 by n square पे maximum value attain करता है. That means this is equal to norm of Sn. And maximum value क्या है? n into x है, तो x को 1 upon n square से replace करो. तो 1 plus n to power 4, तो n square, x square है, तो x को 1 by n square से replace करो. You just compute this value. Numerator में आपके पास 1 by n बचेगा. And in denominator what you will have 1 plus it is
I think I am again doing. होल स्क्वायर आएगा आई थिंक। नहीं नहीं, सिंपल एस एन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, उसकी नहीं फाइंड आउट करनी, डेरिवेटिव की नहीं करनी। डेरिवेटिव फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन एस एन एक्स आपके पास ये है ना, एन एक्स अपॉन 1 + n 4 x² है, दिस इज द फंक्शन, इज इट ओके? यही है ना एन फंक्शन की वन, लेट मी सी। एन स्क्वायर एक्स ये, है। हाँ सॉरी एन स्क्वायर है, हाँ वही, दिस इज एन स्क्वायर एक्स, ओके। सो एन स्क्वायर एक्स है, तो ये देखिएगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, इंडीड एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, तो 1 + 1 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे 2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 1/2 है, वट एवर एन यू चूज। तो यही हमने लिखा कि नॉर्म ऑफ एस एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस एन that is attained at 1/n² and it comes out to be 1/2। तो एक चीज क्लियर है, जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिली दैट मीन्स आपके पास ये सारे के सारे एस एन फंक्शन जो हैं दे आर बाउंडेड फंक्शंस। तो जब आपके पास बाउंडेड फंक्शंस हैं तो यू रिकॉल द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म नॉर्म सेज दैट कि आपके पास एस एन सीक्वेंस जो होगी इज यूनिफॉर्मली convergent and converging to some function s if and only if आपके पास जो नॉर्म्स की सीक्वेंस है एस एन माइनस एस इट गोज टू जीरो। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, आपके पास बाउंडेड फंक्शंस है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके पास आ गया नॉर्म ऑफ एस एन माइनस जीरो, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट जीरो है। ये आ गया नॉर्म ऑफ एस एन एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ इक्वलिटी का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है, तो 1/2 है। तो 1/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, डजंट गो टू जीरो, it doesn't go to zero. So if it doesn't go to zero, that simply means from that the theorem that we have done for the sequences by using the necessary and sufficient for condition for uniform convergence of sequence of functions for bounded functions, and from there it follows that this sequence is not uniformly convergent, क्योंकि uniformly convergent sequence के लिए ये criteria था यहाँ पर कि point wise limit पे जब आप norm find करोगे sn minus 0 का, तो वो norm जीरो को जाना चाहिए था। बट यहाँ पर ये कांस्टेंट सीक्वेंस आ रही है 1/2। कन्वर्जेंट तो सीक्वेंस है, लेकिन हमारी सीक्वेंस की जो रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कि ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए, एंड क्लियरली दिस इज नॉट कन्वर्जिंग टू जीरो, हेंस इट फॉलोज दैट कि ये जो सीरीज है जिसके ये पार्शियल सम्स हैं, ये सीरीज इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, दिस इज पॉइंट वाइज convergent but not uniformly convergent, not uniformly convergent. Is it okay? यस Is it okay? यस So सर। this is the beginning of introduction and how, but you read again, I'm reiterating it, just focus much more on these sequences, because the more you know sequences, the more you will be able to understand the series part. So here are the some of the series which are very tricky to solve. If you find out, look at the first series। फर्स्ट सीरीज में देखिएगा, फर्स्ट सीरीज के जब आप पार्शियल सम्स फॉर्म करोगे, जैसे S1 आपके पास आ जाएगा, S1 आपके पास आ जाएगा सिंपली x/1 + x² है ना। तो S2 जब आप देखोगे, S2 में क्या होता है, S2 में आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास ये है ना, F1 ये है, तो F2 आपके पास ये है। तो यू सी जब S2 फाइंड करोगे तो फर्स्ट टू टर्म्स का है, तो उसमें कैंसिल हो जाएगा कुछ, ठीक है। आपके पास बचेगा सिर्फ 2² यू विल बी लेफ्ट विद 2² 1 + 2³ x², ओके। फिर S3 फाइंड करोगे तो S3 में फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है, तो उसमें ये जो बचा है ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से चलते जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 3² x/1 + 3³ x²। तो इस तरह से एक गैस आपको पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द nth टर्म, एंड nth टर्म विल बी n² x/1 + n³ x², ये होगा। तो देन यू कैन फाइंड आउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट होगी, जैसे पीछे हमने किया एग्जैक्टली वैसे ही होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें उतना, क्योंकि ऊपर n² x था, वहाँ n⁴ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ n है। तो यू कैन चेक आउट कि ये वेदर दिस
series is uniformly convergent or not by checking out whether this sequence of partial sums is uniformly convergent or not. ठीक है, आई एम लिविंग इट फॉर यू टू वेरीफाई बिकॉज एक प्रोटोटाइप मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो सेकंड में भी इसी तरह से हो जाएगा, आपके पार्शियल सम्स कैंसिल होते जाएंगे, क्योंकि S1 देखना, S1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, S1 आपके पास आएगा आपके पास x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस, तो नेक्स्ट तो जीरो जीरो हो जाएगा क्योंकि n-1 है तो 1 - 1 0 होगा। तो S2 में आपके पास आ जाएगा, पहली टर्म आएगी आपके पास जो S1 है प्लस, तो इसकी सेकंड टर्म क्या है, n = 2 सब्स्टिट्यूट करो तो इट हैज टू बी 2x अपान 1 प्लस 2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस इट हैज टू बी x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो जब S1 और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ भी ये कोलैप्सिंग सम्स है, तो यहाँ भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो अगेन आपको उसी सीक्वेंस को चेक करना वेदर दैट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में भी एग्जैक्टली वही होगा, यहाँ भी आपके पास कोलैप्सिंग सम्स है, यहाँ भी आपके आराम से आपके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, क्योंकि सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए आपको पार्शियल सम्स की सीक्वेंस मिलनी चाहिए, और पार्शियल सम्स की सीक्वेंस आसानी से मिल जाए तो यू विल बी एबल टू इजिली well check whether the series is uniform convergent, in which sense it is convergent, whether it is point wise convergent or it is uniformly convergent। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, you will have to see, क्योंकि इसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास Sn जो होगा, Sn will be x summation, let us take k from 1 to n, it has to be to power minus kx। So what you can do, you can take x out, and what you will be having, you can write it as x equals to 1 to n, and you might write it as e to power minus x to power e to power minus x to power k। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो then you can write again it as x को बाहर रख के, you can check it out, k equals to 1 to n, and this is nothing but x for the time। अगर आप x फिक्स करें, तो x अगर आप फिक्स करें तो यू विल बी एबल टू सी x e टू पावर माइनस एक्स को आप r रख लेते हैं तो इट विल बी r टू पावर k। तो ये जो पार्ट बन रहा है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का पार्ट बन रहा है। तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट से जो ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है, दिस इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, तो उससे आपके पास पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, और इसका सम कितना होता है दैट यू ऑलरेडी। तो यहाँ पर कोलैप्स नहीं हो रहा है, बट यहाँ भी आसान है क्योंकि आपको ज्योमेट्रिक सीरीज की हेल्प मिल रही है यहाँ पे। जस्ट ये सारी जितनी भी सीरीज हैं, ये सारी ट्रिक है, इट्स प्रैक्टिस है कि किस सीरीज को किस तरीके से, यहाँ कोई भी कंक्रीट टेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं हमें सीरीज को। ठीक है, तो फिफ्थ में भी एग्जैक्टली वही है, फिफ्थ में भी सम कोलैप्स हो जाएंगे आपके, क्लियर है, क्योंकि फिफ्थ और सेकंड में सिमिलरिटी क्या है कि सेकंड n से स्टार्ट होती है, तो नेक्स्ट टर्म उसकी n-1 थी सेकंड में, तो यहाँ n+1, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सिक्स भी देखिएगा, सिक्स का पैटर्न देखिएगा, सिक्स का पैटर्न क्या है, सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है f1 वो है 1 - x होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है, इसी टर्म को मैंने f1 को x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बन गया आपके पास f2। फिर थर्ड टर्म को क्या किया मैंने, थर्ड टर्म जो f2 था, f2 को मैंने अगेन x से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास बन गया x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर। तो इस तरीके से, या इंडीड दिस x f2 इज नथिंग बट इट इज x स्क्वायर f1। तो इस तरह से जो आपकी nth टर्म होगी वो nth टर्म होगी x टू पावर n-1 इंटू f1। तो जब आप इसका पार्शियल सम फाइंड करोगे तो Sn क्या हो जाएगा, Sn हैज टू बी समेशन, क्योंकि सारी की सारी जो टर्म्स हैं, लेट इट बी k इक्वल्स टू 1 टू, या समेशन भी क्यों लिखना, लेट मी राइट इट सिंपली, where is it razor, let come it out। So it has to be x, it has to be f1 plus x, f1 plus x square, f1 plus so on up to x to power n-1 f1। तो f1 तो कांस्टेंट, ये फिक्स है, तो इसको बाहर निकालो, आपके पास पीछे बचेगा 1 plus x square plus so on plus x to power n-1। तो x आपका ऑलरेडी 0 1 में है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है आपके पास। ये अगेन यही जो ऊपर आपके पास रेफरेंस यूज हो रहा था वही ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये आपके पास
सम बनेगा, अगर ये f1 को अलग से आपको इसको चेक करना है, ये बनेगा x टू पावर k फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। तो जब सीरीज चेक करनी है तो दिस इज अ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज समेशन x टू पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज अ पार्शियल n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये सीरीज हमें मालूम है, नंबर्स की सीरीज है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, बट एट x इक्वल्स टू 1 ये कन्वर्जेंट नहीं है, बी केयरफुल, एट x इक्वल्स टू 1 ये कन्वर्जेंट नहीं है, बट एट x इक्वल्स टू 1 ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये जो हम 6 में सीरीज कंसीडर कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1 पे ये कन्वर्जेंट है, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 1 एवरी टर्म इज 0। तो वहां से ये भी हो जाता है। You just try these exercises. I'm going to these are very beautiful exercises because इसमें कोई भी इन डेप्थ आपको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है। तो आप इनको कर लेंगे, दिस विल बी पुट एज एन assessment for this week. Okay, so do you, any one of you have any question or any query? Okay, then